Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for coming to the Foreign Office. As you are aware that on the 6th of August, last Friday, there was a Security Council briefing on the situation in Afghanistan. Deborah Lynn, the Special Representative for Afghanistan, briefed all members of the Security Council. Today, the Prime Minister chaired a meeting to review the rapidly changing situation in Afghanistan. In our view, Pakistan should have been invited to this briefing. Why? Because we are not only direct neighbors of Afghanistan, we have suffered the most after Afghanistan. We are also one of the biggest stakeholders in peace and stability in Afghanistan, and have been facilitating the peace process in Afghanistan. We made a formal request to be present there. Unfortunately, it was not accepted. At the time of India assuming the presidency of the Security Council, for the month of August, it's a monthly event. For the month of August, we had reminded India to act objectively, but unfortunately, a country aspiring for a permanent seat in the Security Council did not behave in the manner that was befitting of that responsibility. By not acceding to Pakistan's request to brief the Security Council, India has been, in our view, in breach of its obligation as President of the Security Council. As you all know, Pakistan has been facilitating the peace process. Our role has been and will continue to be of a facilitator of the Afghan peace process and not of a guarantor. We cannot guarantee, we can only facilitate. It is for the Afghans to decide about their future. Pakistan has been consistently advocating that there is no military solution to this conflict. A negotiated political solution is the only way forward, to which the international community now agrees. This is a fact that Prime Minister Imran Khan has always been an advocate of a negotiated political solution. And I'm glad that there is a convergence at the international level that this is the sensible way forward. Pakistan played an instrumental role in bringing the Taliban to the negotiating table in 2019. Pakistan facilitated the conclusion of the US-Taliban peace agreement in February 2020 in Doha. Pakistan helped to convene the intra-Afghan negotiations in September 2020, and in December 2020, Pakistan contributed to the rules of procedure agreed between the parties. Pakistan has joined the Troika, which is US, Russia, China, to facilitate
the intra-Afghan talks and the Doha process. We look forward to the upcoming Troika meeting on the 11th of August in Doha. We did invite, and you are aware of that, Afghan leaders, and by the way, this invitation was to Afghan leaders minus Taliban, to a conference in Islamabad to discuss the way forward. This conference was postponed on President Ashraf Ghani's request. We reiterated and we reiterate the need for effective utilization of available mechanisms of cooperation, including Afghan-Pakistan Action Plan for Peace and Solidarity. We have a mechanism available, and we have repeatedly said, instead of pointing fingers, if you have an issue, bring it up, let's discuss it and find a way out. I have invited the Afghan Foreign Minister formally in writing to visit Islamabad and raise the issues that he has in mind, so that as neighbors we can discuss them and resolve them. We also urge the government of Afghanistan to refrain from the blame game and engage with Pakistan in a meaningful manner to address the challenges to peace, security, and progress in the region. Once again, the peace process in Afghanistan is at a critical juncture. It is important that all energies are focused on finding an inclusive, broad-based, and comprehensive political settlement through a process that is Afghan-led and Afghan-owned. We have repeatedly stated that we have no favorites in Afghanistan. We see all sides in the conflict as Afghans. We do not, differentiate. They're all Afghans, and they have to decide about their future. It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. The issues of governance and meltdown of Afghan National Defense Forces needs to be looked into, and not just start pointing fingers at Pakistan. In his statement, the UN Security Council, the Afghan representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan to mislead the international community. We categorically reject those baseless accusations. As the US NATO forces are near completion of their withdrawal from Afghanistan, we are seriously concerned at the growing violence and lack of substantive progress in the intra-Afghan negotiations. We are also deeply concerned at the reports of human rights violations and urge all sides to show full respect for human rights and international humanitarian laws. We have shared
perspective with all UN Security Council members through a circulated statement. Our position is clear and has been consistent. Thank you. जी प्लीज So what was the turning point between the relationship of Pakistan and Afghanistan? That is the matter of the daughter of the ambassador or something else? देखिए, as I said, the situation is evolving. Unfortunately, things have not been managed well. I will not go into details. I think the world should ponder and see that the amount of money spent, where is it gone? The capacity building, the training, the equipment, where is it? The lack of will to fight, the capitulation that we are seeing in Afghanistan, can we be held responsible for that? No, we cannot, and we should not. Now, should Pakistan be held responsible for failures of others? No. We will not be apologetic. We will articulate our point of view, nationally and internationally, because we have been sincere and we have been honest in attaining and facilitating peace and stability there, because that was in sync with our objective of Imran Khan's PTI government. And what is that objective? That objective is economic security of Pakistan. Now, how do we get economic security of Pakistan until we have peace in the region? How do we get our regional connectivity that Prime Minister Imran Khan had traveled to Tashkent to talk about? If we do not have peace, we cannot get the regional connectivity. If we do not get the regional connectivity, we do not get the economic security that is required. You know, energy is one of our serious challenges. And through TAPI and the CASA 1000 transmission line, and through the railway connections that we foresee with the Central Asian republics, we get that connectivity. Unfortunately, if Afghanistan remains unstable, we have nothing to gain. We have everything to lose. And we have paid a huge price. Let the world know that Pakistan has been a victim. The people of Pakistan have suffered. The price that we have paid has to be understood. We've had close to 80,000 casualties. We've suffered huge economic losses. The world should not be oblivious of that. And we will very clearly project our point of view to the international community. जी प्लीज I'll come here. Thank you, Ali Hussain, representing Business Recorder. शाह साहब को पिछले दिनों अशरफ गनी ने भी जो है तनकीद की है यूएस क्विक विथड्रॉल जो कर रहे हैं अफगानिस्तान से। ये जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, अगर महीने या 2 महीनों में तालिबान काबुल को कैप्चर कर लेते हैं तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी? क्या एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान के लिए? रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं करेंगे? पहली बात, if you look at Pakistan's statements that we've made at different forums, in our bilateral meetings, at international forums, what have we been saying? We have been saying Pakistan is advocating a responsible, orderly withdrawal.
there are दो लफ्ज काबिल गौर है, responsible, orderly withdrawal. Now, what does that mean? It means that A, when you are withdrawing, withdraw in a manner that there is no vacuum created within Afghanistan. Because what we fear, that if there is a vacuum, who will benefit? Not Pakistan, not the region. The actual beneficiaries of that vacuum will be terrorist outfits that have been hurting Pakistan, that have been hurting this region. That is why we expected along the withdrawal there would be a process of negotiations, and they will go hand in hand. If you divorce one from the other, the objective would be chaos, and we do not want to see chaos in Afghanistan. That's one. On the question of forcible takeover, Pakistan has not been supportive of a military takeover. Period. When we are talking of a political solution, that is the opposite of a military takeover. I mean, it's understood. Because we feel that that would result in a lot of bloodshed. And the people of Afghanistan have seen a lot of bloodshed. They have suffered a lot. And that suffering should come to an end. The leadership in Afghanistan should rise to the occasion and provide the leadership to see how they can avoid that. जी रास्ता ख्याल थैंक यू सर। राशिदा सियाल अब तक से सर ये बता दीजिए कि अफगानिस्तान के मसले को लेकर पाकिस्तान ने जितना अमेरिका का साथ दिया, क्या पाकिस्तान को उतनी इम्पोर्टेंस इन रिटर्न मिली कि नहीं मिली, ये बता दीजिए, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से अभी तक प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई बात नहीं की गई। सेकेंडली, मोहित यूसुफ साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अमेरिका ने तो कोई अटैक या बेसिस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। क्या? सर, एनएसए ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अमेरिका की जानिब से बेसिस के मांगने के हवाले से कोई बात नहीं हुई अफगानिस्तान को लेकर, तो इस पे भी क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू। Mohtama, to begin with, our objectives in Afghanistan are in sync with what the US is saying, what the international community is saying. We are on the same page. We are saying exactly what they want, because that is in the regional interest. Now, if our interests are allied, then we should be working more closely. We should have more consultations. We should have more coordination, right? And if there is a lack of that, or if there is a growing perception of lack of that, it's not helpful. It is not helpful in achieving our shared objective. One. Secondly, let the world know that peace and stability in Afghanistan is a shared responsibility. Pakistan will play its role, but the international community cannot shy away. They also have to contribute and continue to play its role. जी ज़रूर So basis वाला NSA का statement जो national security advisor का जो statement है basis वाला
Well, the Prime Minister has made a very categorical statement on what we will and what we will not do. जी जरूर Thank you, sir. This is Zarur sir from GWLG. कुरैशी साहब, एक नई सूरत इवाल्व हो रही है। सलामती कौंसिल में इंडिया ने पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अभी 52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कल कोयटा में जो है वो अटैक हुआ, पुलिस वाले शहीद हुए। इसी तरह चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है, CPEC को टारगेट किया जा रहा है। डू यू थिंक a new great game is being initiated in this region? Thank you. Well, we have repeatedly expressed our concern on the role of the spoilers, and we have said there are spoilers within and there are spoilers outside. There are elements who do not want to see peace and stability for different reasons. Some to keep Pakistan in a sandwiched position, and some for personal perpetuation of their ambitions and power. जी नवीद साहब शाह साहब नवीद अकबर आए से सर, अफगानिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, अशरफ गनी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। तो ऐसे माहौल में हम कैसे अपना फैसिलिटेटर के किरदार बेहतर अंदाज में अदा कर सकते हैं, क्योंकि अशरफ गनी गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया पर भी हमारे खिलाफ सैंक्शन पाकिस्तान खिलाफ चला जा रही है, Got it. किया जा रहा है। तो Got इस it. बारे में बता दें। Now the point is, let me answer this first. देखिए, the point is, we are saying what we are saying. We are doing what we are doing for the people of Afghanistan. The present rulers have their own perspective. They can have their own objectives. But our understanding is that the people of Afghanistan want peace and stability. They're looking towards a leadership, and they're looking towards all regional stakeholders and the international community to play a role of facilitating that process. So, we will not let some harsh statements block our desire to attain peace and stability. At times, statements have been made that are unfounded, are baseless, and we can respond. And we can respond very effectively. But we have chosen to exercise restraint in the larger interest. इमरान दूसरा सर ये कि जो अभी जो रिसेंट वेव जो भी चल रही है बलूचिस्तान के अंदर और बाकी एरियाज के अंदर, इसमें किस हद तक जो लिंकेजेस हैं वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं? On the question of the tragic and cowardly Dasu incident, Pakistan has almost completed its investigation, and we've drawn our conclusions. We are in consultations with our Chinese friends. As you are aware, the team was here, we facilitated, and once we've consulted with them, inshallah, we intend to share
are the outcome of our investigation with the media soon, inshallah. ऐसा पाकिस्तान एक्सप्रेस टीवी से शाह साहब कुछ बॉर्डर बंद है, गोलफम बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, दोस्ती बाग जो बॉर्डर है वो बंद है, दूसरी जानिब कुछ तालिबान ने इन जो रास्ते हैं वो बंद किया हुआ है। क्या हमारी गवर्नमेंट अफगान अथॉरिटी के साथ इनको खोलने के लिए बातचीत कर रही है या तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, और क्या तवक्को करते हैं कि ये बॉर्डर जल्द खुल जाएंगे? You would recognize the fact to facilitate the Afghans, their trade and their people, we opened 5 crossings despite the COVID pandemic. This was a conscious decision. We helped the stranded Afghans go back home, and we facilitated transit trade as well. So the idea was to be supportive to their needs. We have always been saying that the border has to be managed in a manner which is acceptable to both sides. And we have done our bit for better border management. And one of the concrete steps that we have taken is fencing the border. Today, almost 98% of our border with Afghanistan is fenced. Why are we doing that? We spent a lot of money on that so that we have a better control of who is coming in and who is going out. Why are we doing that? As responsible neighbors, to check the unwanted elements to come in. And people have been coming in using Afghan soil against Pakistan, and we have a very clear policy that we will not allow our soil to be used against anyone, including Afghanistan. सर लास्ट में रसूल साहब के पीछे सॉरी मैं करना है। Thank you. Sulaiman Nasser from the BBC. शाह साहब, इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो तालिबान have taken control of the 6th provincial capital in Afghanistan, Aibak district, Aibak in Samarkand province. और इंट्रा-अफगान टॉक्स जो है वो अभी तक कोई बेनतीजे नहीं है। सो आपके ख्याल में क्या वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं? क्योंकि जिस तरह तालिबान गैर पे कंट्रोल कर रहे हैं प्रोविंशियल कैपिटल्स पर, तो इससे तो लग रहा है कि 1-2 माह में ही पूरे 34 प्रोविंसेस या भी जो पेटियां फेर रहे हैं उन पर भी कब्जा कर लेंगे या कंट्रोल हासिल कर लेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रा-अफगान टॉक्स नाकाम हुए हैं या अभी कोई उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर अफगान टॉक्स कामयाब होती हैं तो ये कामयाबी का सेहरा अफगान क़यादत के सर होगा। अगर खुदा न खास्ता अफगान टॉक्स नाकाम होती हैं तो ये नाकामी की जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान पे जाती है, पाकिस्तान पे नहीं। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, करता रहेगा। पाकिस्तान में क्लैरिटी है, पाकिस्तान में कोई अभाम नहीं है, और पाकिस्तान बिल्कुल हमने अपनी मंजिल का, अपने मुस्तकबिल के रास्ते का तयन कर लिया है। हम डगमगाएंगे नहीं। हम बिल्कुल हमारी जो सिमत है वो वाज़ेह है, और इंशाअल्लाह हम उस सिमत पर कायम रहेंगे। हमें इस बात का एहसास है कि मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिशें जारी हैं, तोहमतें पाकिस्तान पे
लगाई जा रही हैं बावजूद, और मुझे कई दफ़ा हैरानी भी होती है और अफसोस भी होता है कि कई दफ़ा हमारे अंदर से कुछ लोग हम कलाम हो जाते हैं। मैंने आज बदकिस्मती से एक स्टेटमेंट देखा है एक मुंतखब नुमाइंदे का, जो मुझे देखकर दुख हुआ कि वो किसकी ज़बान बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान की ज़बान बोल रहे हैं या वो हिंदुस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ, मैं नाम नहीं लेता। जी एजाज साहब। टू पार्ट क्वेश्चन है मेरा। डिप्लोमेसी में हमने बहुत सारी दफा देखा है कि फ्रंट पर कुछ और मामला होता है लेकिन उसके बैक पर कुछ और मामला होता है। आपने कुछ इंडिकेट भी किया, क्या ऐसा नहीं है कि जो सीपैक एकदम दोबारा राइज होता दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को सीपैक से हटाने के लिए एक एफर्ट जो हो रही है, ये एक जानिब उसका पार्ट हो और दूसरी जानिब जो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात हैं उनका इन दोनों चीज़ों का शख्स आना हो। दूसरा पार्ट ये है कि जब आपको याद होगा कि जब बरतानिया इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा था, उस वक्त भी आपसे बातचीत हुई तो आप फरमाते थे कि कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आ रही। आज कहीं हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं या रियलाइज कर रहे हैं कि अगर उस वक्त हमने न किया होता ऐसा और इंडिया के खिलाफ एक ब्लॉक जी नहीं, जी तो नहीं, आज ये ना होता। जी नहीं। देखिए, दो जुज़ हैं आपके सवाल के, मैं पहले आ जाता हूँ। जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि सबको ये मंसूबा उनके दिल पे नहीं बैठता और उनकी अपनी तरजीहात हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरजीहात बड़ी वाज़ेह हैं और इस पर एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है और इंशाअल्लाह मुश्किलात के बावजूद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सीपैक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने की गाहे बगाहे कोशिश होती रही है और आप देखते हैं कभी सरीना पे हमला, कभी दासू का वाक़या, कभी जौहर टाउन लाहौर की कार्रवाई, ये सब आप देखेंगे तो ताने बाने कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, लेकिन हमारे अज़्म को और हमारे हौसले को वो मांद नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह हम इस पर पूरी कौम मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद है और इनको मुकम्मल करना हम पाकिस्तान के मफाद में समझते हैं। काम जारी रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप होती है ना, वो मेरे भाई उसके लिए फ़ैसला बहुत पहले किया जाता है और ममालिक उसके लिए अपनी तगोदो जुस्तजू साल हा साल पहले कर लेते हैं। ये जो हिंदुस्तान को मेंबरशिप मिली, ये पिछले 1 साल में या 2 साल में इसका फैसला नहीं हुआ, ये पहले से हो चुका था और वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने अब जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए जुस्तजू करनी है अगली सीट के लिए, जो हमारी ख्वाहिश है कि हम 2025-26 में हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने, तो 25-26 तो दूर है अभी, लेकिन हमने उसकी तगोदौ 20 से शुरू कर दी है, कई साल पहले, क्योंकि आपको लोगों को कायल करना पड़ता है, लोगों को मनाना पड़ता है और वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की नुमाइंदगी होती है, तो उस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक फोरगॉन कंक्लूजन था। जी नैयत थी। कौन सा? नहीं, मैंने, वो तो मुंतखब नुमाइंदा नहीं है ना, वो तो असेंबली में नहीं है ना। मैंने कहा एक मुंतखब नुमाइंदे का बयान आया है, आज मैंने अखबार में पढ़ा है और मुझे पढ़कर अफसोस हुआ। शाह साहब, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि बैनुल-अक़वामी साजिशों का सामना कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त और पहले से कर रहा है,
افغان بارڈر پہ ہم سچویشن دیکھتے ہیں اس وقت میڈیکل اور دیگر جو تجارت کی بھی آپ نے بات کی، اس وجہ سے دستک دینی شروع کر دی ہے افغان سائڈ سے. تو کیا پاکستان ایز اے اسٹیٹ جس نے پہلے جو ہے وہ افغانیوں کو پناہ بھی دی اور اس کے بعد کنسیکوینسز بھی دیکھے اس کے، ایز اے اسٹیٹ اکنامیکلی ہم اس قابل ہیں کہ ہم مزید افغان ریفیوجیز کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں؟ آپ کا اس کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیے، ٹو بی آنیسٹ، پاکستان has engaged with the international community, and we have said that Pakistan has been a host, and I would say, allow me to add, a very generous, a very hospitable host to over 3 million Afghans in Pakistan for 4 decades. The numbers have gone up and down, but for decades we've done that. Honestly speaking, we do not have the capacity to absorb more refugees. We do not. The international community is hardly providing any assistance to Pakistan to look after them. Whatever we are doing, we're doing from our resources, right? So, we are in touch with them, we are talking to them, and we would want them to reach an understanding with us. God forbid, if there is a new influx, then what we should do collectively, and what role the international community should play to facilitate not just Pakistan. If there is an influx, other neighbors of Afghanistan will get affected. There are other countries that border Afghanistan, and they're equally concerned. I've had discussions with the immediate neighbors of Afghanistan, foreign ministers, and they're concerned. جی نبی صاحب بیٹے سر چلیے انہیں پوچھ لینے دیں پھر آپ کے پاس. عادل نظام کم ٹی وی سے. پاکستان کی جانب سے بعد جو الزام رکھے اس کے باوجود اسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا. پہلی بار ہے ایک اسٹرانگ موقع پاک کی طرف سے دیا گیا ہے. افغان سفیر کی جو بیٹی تھی مبینہ افواہ، اس کے بعد جو پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان کے خلاف اور افغان سفیر کا واپس جانا، وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا تحقیقات کے، انہوں نے تمام حصہ بھی لیا. امید یہی ہے کہ پاکستان میں جو تحقیقات ہیں اس کو مسترد کر دیا جائے گا. اس سے پہلے کیا ہم جو فوٹیجز ہیں، جو تمام تحقیقات ہیں، اس کو پبلک کر دیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے سن کے تکلیف ہوئی، افسوس بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی. کسی کی بیٹی اگر متاثر ہوتی ہے تو ہم سب متاثر ہوتے ہیں. ہمارا ایک اپنی مشرقی تہذیب ہے، ہماری اپنی اقدار ہیں، ہماری اپنی اسلامی قدریں ہیں. لیکن جب ہم نے انویسٹیگیشن کی، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو کہا گیا وہ حقیقت کے برعکس ہے. جو ہندوستان نے پروپیگنڈا کیا اور اس کو ہوا دینے کی کوشش کی، اور افغانستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی جس سے کہ پاکستان کی جو گڈ ول ہے ان کے لیے اس کو متاثر کیا جائے، اس کو استعمال کیا گیا ٹو وپ اپ ایموشنز. تو ہمیں اس کی تشویش تھی. ہم نے دیانتداری سے معاملات کی تحقیق کی، اور جب افغانستان کے سفیر کو واپس بلایا گیا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ان سے کہا، اسی کمرے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس، آپ میں سے کئی دوست اس پہ موجود ہوں گے، کہ افغانستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ آج جو افغانستان کے چیلنجز میں دیکھ رہا ہوں اس میں زیادہ کنسلٹیشن اور کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. کہ وہ اپنا وفد بھیجنا چاہتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے،
और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को असेस करने के लिए कि हमने क्या किए हैं, क्योंकि मैंने बताया था जनाब हनीफ अतमर साहब को कि हमने आपकी सिक्योरिटी को मज़ीद बीफ अप किया है, आपके काउंसलेट्स की सिक्योरिटी को, और आपकी एम्बेसी अफगानिस्तान है उसकी एम्बेसी को हमने मज़ीद बीफ अप किया है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाएं। वो आए, हमने उन्हें खुश आमदेद कहा और हमने उनके साथ पूरा तावन किया। हमने इन्वेस्टिगेशंस जो हमारी थी उनके साथ शेयर की, हमने कुछ पोशीदा नहीं रखा, कुछ पोशीदा नहीं रखा, हत्ता कि हमने उनके सामने जो हमारे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी वो उनके साथ शेयर की, बाकायदा उनको दिखाई, पोशीदा नहीं रखी। वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट विद देम, आपसे नहीं की, उनसे कर ली। क्यों? एक, उनकी तसल्ली और तशफ़ी जरूरी थी। नंबर 2, वी हैड नथिंग टू हाइड। ठीक। नंबर 3, हमने अभी उसको उस तरह उजागर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बारहा हमसे ये गुजारिश करते रहे, मुतालबा करते रहे कि प्लीज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द फैमिली। उसको मद्देनजर रखते हुए एहतरामन हमने वो नहीं किया। अब वो आए, हमने सब कुछ उनसे शेयर कर दिया और फिर उनसे तकाजा किया है कि अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मज़ीद आगे अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे तो आप फैसिलिटेट कीजिए। हमें आप और हमें उस बच्ची तक रसाई चाहिए होगी शनाख्त के लिए और मालूमात के लिए। तो हमारी नीयत साफ थी, साफ है, और हमने दयानतदारी से कुछ पोशीदा नहीं रखा और पूरी तहकीकात का निचोड़ उनके सामने रख दिया। और हमें ये भी किसी हद तक इदराक है कि जब वो यहां से जाएंगे वो हमारी बात के बरक्स बात करेंगे, जैसे आप फरमा रहे हैं। हमें उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो वही राग अलापेंगे जो जहन बना के आए थे, लेकिन उसके बावजूद इट वॉज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू व्हाट वी हैव डन एंड आवर कॉन्शियंस इज क्लियर। इसके बाद मुन्ना आपके पास है। सर, सरहद पार से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर है वो भी फूट पड़ी है। तो इस तमाम का सूरत हाल में अमेरिका ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि अपने बॉर्डर्स जो हैं वो अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए खोलें। तो कैसे देखते हैं कि क्या मज़ीद इस तमाम अफगान रेफ्यूजीज़ के जो उसमें बेस में दहशतगर्द यहाँ पर आ सकते हैं? क्या अमेरिका के मुताबिक किस नज़र से देख रहे हैं? एक तरफ तकाजा किया जाता है कि बॉर्डर खोलें, दूसरी तरफ तकाजा किया जाता है कि बॉर्डर को मैनेज किया करें। देखें ना, जब आप बॉर्डर खोलते हैं तो फिर यकतरफा तौर पे तो नहीं खोलेंगे ना, लोग आएंगे तो जाएंगे भी सही ना। ठीक, आने के लिए तो आप कहते हैं खोल दे, और अगर यहां से कोई जेन्युइन लोग भी जाते हैं तो हम पे इल्जाम लगने शुरू हो जाएं कि जनाब देखा, जैसे कि फेक किस्म की क्लिप्स चल गए कि देखो देखो ये बाढ़ के साथ बैठे हैं, अभी ये घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मकसद कहने का मतलब है न, जीने किसी तरह तो जीने दीजिए ना। हम तो ये कह रहे हैं, हम मोहतात तरीके से अपने शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहते हैं जो उनके और हमारे एक हैं, जो स्टेटेड हैं वो तो एक है ना। तो उसके लिए जहां हम बेहतरी समझेंगे हम करेंगे और हम कर रहे हैं। किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, पर अपना दिफा करना हमारी ज़रूरत भी है और बहतानों से बचना भी हमारी ज़रूरत है। जी मुन्ना सर, सप्लीमेंट्री सवाल था अफगान सफीर के साथ के हवाले से भी
کہ آپ نے کہا کہ پاکستان نے اپنی طرف سے کوئی انفارمیشن ان سے شیئر کی، تو کیا شیئر کرنے کے بعد کیا وہ اس موقف کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اغوا نہیں تھا؟ ان کا کیا نہیں تھا؟ تھا؟ دیکھیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں محترمہ، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو اغوا کا تاثر دیا گیا تھا وہ درست نہیں ہے. ٹھیک، اب کیا وہ اس کو تسلیم کریں گے؟ نہیں، مجھے خدشہ ہے وہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. Madam, at times you know the reality. At times you know the reality, but you play to the gallery. پارلیمنٹ کا اس پہ یہی اپوزیشن کی جماعتیں موجود تھی نا. اچھا، اب الیکشن ہوتا ہے، آپ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں، پوری کیمپین کرتے ہیں، پورا میڈیا آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، جو کچھ آپ نے کہنا تھا آپ نے کہا، جو لوگوں نے سننا تھا لوگوں نے سنا. آپ کے بیانیے کو پذیرائی نہیں ملی. کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. اب آپ حکومت بھی اپوزیشن کی ایک میجر جماعت کی، وہاں وزیر اعظم بھی پی ایم ایل نون کا، 5 سال سے حکومت بھی وہی کر رہے ہیں، انتظامی ڈھانچے پر کنٹرول بھی ان کا ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز کا استعمال بھی وہ کر رہے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی وہ کرتے ہیں، الیکشن سے پہلے مراعات کی اناؤنسمنٹس بھی انہوں نے کی، سرکاری افسران کو متاثر کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ریگولرائز بھی انہوں نے کیا جی، اور نتیجہ ماننے سے کترا بھی وہ رہے ہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں لوگوں نے اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا. آپ نے تو خود حلف اٹھا کر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے خواتین کی سیٹس پر، ٹیکنوکریٹ سیٹس پر تسلیم کر لیا رزلٹس کو. یو پارٹ آف دا سیٹ اپ اوور دیر. ٹھیک ہے، اٹ سو ہیپن کہ لوگوں نے آپ کو اپوزیشن کا رول دیا ہے تو خندہ پیشانی سے 5 سال وہ رول ادا کیجئے اور اگلی باری کا انتظار کیجئے. Second last question, then the Foreign Minister has another important commitment. Thank you, sir. This is Shabir Mahmood from Delhi Company and Channel 5. سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان ڈائریکٹلی افغان مہاجرین اور افغانستان سے ایک عرصے سے متاثر ہو رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور افغان ڈائلاگس کے لیے بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ الزامات بھی پاکستان پر ہی آ رہے ہیں، اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کس جگہ پہ کمی رہی ہے، اور کیا کہیں پہ کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے افغان کیوں پاکستان پر اس طرح کی الزام تراشی کریں؟ تھینک یو. وہ کیا کہیں کہ ہم ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کیا کہیں، وہ کیا کہیں؟ دنیا آج حساب مانگ رہی ہے، اور یہ حساب مانگے گی دنیا. لکھ لیجئے میری بات، آج نہیں تو کل امریکا کا ٹیکس پیئر، برطانیہ کا ٹیکس پیئر، یورپ کا ٹیکس پیئر یہ سوال اٹھائے گا کیا آپ نے اربوں ڈالر جھونک دیے، حاصل وصول کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ صرف پاکستان ذمہ دار ہے. آئی ایم سوری. Yes, there could be a vested interest that will project that point of view. By and large, there are fair people, and there is a fair, element in the media, international media as well. And I am sure they will make their own judgment on what happened. It's not a question of 2 months or 2 years. 20 years. 20 years was spent in Afghanistan. $2 trillion was spent in Afghanistan. Come on, who's to be accountable for that? If there's misgovernance over there, if there is corruption over there,
If there's mismanagement over there, can Pakistan be responsible for that? No. Pakistan is not responsible and Pakistan will not be apologetic. जी लास्ट क्वेश्चन जी इनसे शाह कुरैशी साहब वज़ीर मस्जिद टीवी चैनल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नौवली महसूद ने CNN को जो इंटरव्यू दी थी उस पर आपका क्या कमेंट्स है, और दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अब तक क्या इक़दाम उठाए हैं? मैं पाकिस्तान की तर्जुमानी करता हूँ, तहरीक तालिबान की नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 6 अगस्त के होने वाले इजलास के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया, जिसमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ। अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत के लिए भारत से बतौर सदर सलामती कौंसल राब्ता किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भारत को ये रवैया ज़ेब नहीं देता बतौर सदर सलामती कौंसल। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है, पायदार अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान के समझता है कि अफ़गानिस्तान के मसले का वाहिद हल तमाम अफ़गान फ़रीक़ों पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में है। अफ़गानिस्तान के तनाज़े की भारी माली और जानी कीमत पाकिस्तान अदा कर चुका है।